Hello, people. I am Jaby KOAY, joined by ACHARA, KIRK, and MINK. Hi. We're going to look at Engineering Girls web series season 1, episode 2, Dar Ke Ladu. This is from the Timeliners. Thank you, Timeliners, for allowing us to react to this. Very much appreciated. Enjoyed episode 1 quite a bit, and looking forward to this one. So here we go. तो प्लेसमेंट्स में क्या बुराई है? अच्छाई क्या है? गुलामी करनी होती है ना सिर्फ. देख मैं तो फिर भी मास रिक्रूटर की ड्राइव में ना बैठ के ठीक ठाक पैकेज ले लूंगी. तू ना तब भी अपना ये स्टार्टअप वाला आइडिया लेके धक्के खा रही होगी, देख लियो. उसे धक्के खाना नहीं, मेहनत कहते हैं. हर रोज जाके मेंटर से मिलती हूँ. कल डायरेक्टर के साथ मेरी मीटिंग है. मग्गू मुझे फंडिंग मिल जाए ना एक बार, बस फिर तू देखियो. बस सुनते ना 6 महीने हो गए. कुछ उखाड़ तो पाई नहीं है तू. तो तू क्या उखाड़ लेगी? तेरा फ्यूचर गुलामी है. जॉब करेगी ना तो कंपनी की गुलामी करेगी. फिर तेरे पापा तेरी शादी करवा देंगे तो एक की जगह दो गुलामियां करेगी. फिर सोनू मोनू पैदा हो जाएंगे तो 2 की जगह 4 गुलामियां करेगी. पर तू है तो मग्गू ही ना, तो तुझसे पहली वाली गुलामी तो निभाई नहीं जाएगी. तो स्टार्टअप गाते गाते मेरे पास आएगी. क्या करने मग्गू? गुलामी करने. Wow. Yikes! 2 साल से तो मैं वैसे ही तेरी गुलामियां कर रही हूँ. जब तेरी वो गंदी फंगस लगी ब्रेड पे कॉकरोच नाचते तो पूरा कमरा कौन साफ करता है? मैं. झूठी डिटर्जेंट एलर्जी बताकर 2 साल में एक चड्डे बनियान कर दी. तेरी सारी लॉन्ड्री कौन करता है? मैं. और फर्स्ट ईयर में जब सारे सब्जेक्ट सेम थे, पूरी रात बैठ के तुझे सारा सिलेबस पढ़ाने के बाद भी तुझसे कम नंबर किसके हैं? मेरे. मैं स्टूपिड लड़की जो सारा तेरा काम करती हूँ, तू सिर्फ मुझे बुली करती है. साबू, जस्ट बिकॉज मैं तुझे सुना नहीं सकती ना, तू सिर्फ मेरी एडवांटेज लेती है, समझी? तूने मुझे अभी जस्ट सुनाया. तो तू जैसे गंदे रूममेट को कभी तो सुनाऊंगी ना. मैं गंदी रूममेट हूँ? जब तू उदय जैसे लॉन्डो के साथ अपना कटवा के आती है तो तेरी माँ बन के तेरे लिए लड़ने कौन जाता है? तेरे लिए घर से गरम लड्डू बना के डब्बे में डाल के कौन लाता है? मैं. साबू, ये सिर्फ लड्डू है. कल मेरा इंटरनल का पेपर है, तू मुझे पढ़ने नहीं दे रही है. और कौन सा ऐसा बड़ा काम है लड्डू बनाने में? बड़ा काम? इस पूरे हॉस्टल में तुझ जैसी लूजों को पालने की हिम्मत मैं रखती हूँ. पता है उस वार्डन को मैं हजार रुपए एवरीडे दूंगी ना, तो भी तुझे नहीं पालेगी. इस विंग में ना मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मुझे खुशी पाल लेंगी. अनाथ नहीं हूँ मैं. अनाथ नहीं है ना तू? नहीं है ना तू अनाथ? तो एक काम करना, अटाची उठा और निकल जा कमरे से. हाँ निकल जा. ढूंढ ले दूसरी रूम में. उसकी भी गुलामी करियो तो फिर. Got very intense very quickly. Yeah. Oh my. No. ऐसे भी मेरा जैकेट मत फेंक. अच्छा मैं चली जाऊं. वैसे भी तूने मुझे नौकर बना के रखा हुआ था. तू तो बस खुद की रोती रहे. जो मैं करती हूँ तेरे लिए वो तो कभी किसी को दिखता ही नहीं है. क्या किया तूने वाली बैठे है ना तेरे लिए? तू तो ऑफिस से दिखेगा नहीं. तुझे बोलने से फायदा क्या है मग्गू? Yeah, she doesn't really want it to Yeah. end. जा रही हूँ मैं. कुछ बोलना है तुझे? निकल. I wish I could pack that fast. सच I know, में me जा रही too. हूँ. तू जा. You literally have no clothes. I'm actually leaving. Uh-oh. She feels bad. देखा आ गई ना वापस. मुझे पता था तेरी तो बस की नहीं है. तुझे कौन पालेगा? फट गई ना. फट गई. Who you, Sabu? For you. Oh gosh, I have to use that. I thought her like laugh reaction was gonna be like, oh, like we were just joking. Yeah, I thought. No. For you. Oh. I feel like something happened. Well, yeah, I mean, Between it's the first episode and it's the a next tiff. episode. Yeah. It's a tiff. They had a tiff. I like saying that because their name is Tiff. Yeah, they just had a bit of a tiff, like people do. Yeah. You know? Yeah. People Sometimes best friends have fights. But I feel like girls' fights can really escalate a lot harder than guys' fights. You're not wrong. Because all the sharp tools come out from the back of the shed. You know what I'm saying? It's like, oh, and you did this and this, and it's like all the deep cuts. But Yeah. usually it's like, can we just make up now and hug it out? Yeah. But this time they didn't. A lot of pride there. Yeah. Well, she was so vocal. Yeah. In the first episode, she was so like, please help me, please help me. Right. Yeah. Well, I mean, she's vocal with her girlfriends, but not when it comes to like standing up to a guy. Dude, yeah. Yeah. So. Ooh, it's like all the built-up resentment just comes out all in one go. Right. It's too real. What are you gonna do? Oh.
Pride will have you sleep on a bench if you have to. New roommate. What happened? Hi, Sabu. देश की इतनी रात को तू हॉस्टल की दुनिया में क्या कर रही है? अबे वो गर्ल्स हॉस्टल है, नारियां नहीं है जो मैं स्पेशल ट्रीट लेने वाली हूँ। मगू से मिलना, उससे बात मुझे पढ़ाएगी। तू CSE से ECE में कब शिफ्ट हुई? अरे मैंने स्ट्रीम नहीं चेंज करी है, मेरी वो फर्स्ट सेम में सप्ली आ गई थी केमिस्ट्री में। नहीं है मग्गू यहाँ। अबे तू बकचोदी मत कर यार, साबू मुझे मिलना है, उसने कहा था मुझे पढ़ाएगी। अरे सच्ची में नहीं है मग्गू, इधर जाना, मैं बिजी हूँ। बड़ी अजीब है तू, उसने मुझे प्रॉमिस किया है जब कि यार मैं बिजी हूँ, तू जाना यार। क्या बिजी है? अरे नहीं है ना मग्गू इधर यार। क्या है मगू? बोला ना नहीं है। You're just gonna knock on anybody's door, like, can I sleep here? I thought it was interesting that like she just kept pushing her way into that room. This is just like no concern for someone's bubble. Nope. क्या चाहिए? So what happened? My roommate and I हिंदी में बात करो। मेरी रूममेट साबू और मेरी लड़ाई हो गई। उसने मुझे रूम से निकाल दिया। क्या मैं आपके साथ आके रह सकती हूँ? Yes, of course. Oh, Who's this thank you. chick? Yeah. Thank you. Houseful here. Oh, so she's just knocking on random doors. I thought that was like a very specific person. Yeah. Oh, I love this stomp music. Because they're using the doors with the music. Right, yeah. Oh, is Wink, this like wink. a What does it last say? resort? Wink if you want She me. clearly does not. Oh. हाँ जी, बोलो। Hi. हाँ. I love you too. क्या चाहिए? Oh, she's talking on the phone. मोना क्या हुआ मेरी? Naughty? No. अरे बोलो ना। I hate when वो people do मेरी that. रूममेट है, बहुत बड़ी bitch है। उसने तो वो साबू की रूममेट है ना? हाँ बहुत भाव बढ़ गए उसके, देखा था मैंने उसे कॉरिडोर में। बहुत बढ़ गए हैं। वो भी घर से वापस आई है ना? हाँ जब से आई मुझे पढ़ने नहीं दे रही इंटरनल के लिए, कह रही है लड्डू खा लो लड्डू खा लो। क्यों खाऊं मैं लड्डू? उसके लड्डू में ऐसी क्या बात? अरे तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आके बात करते हैं, अंदर आजा, कम कम मिल। Ah, नोटी आप नहीं, ठीक है? आजा आजा कम। वो एक्चुअली मेरी रूमी ना अपने बंदे से मिलने अपनी मौसी के यहाँ गई है। तो सब चिल है। ओके थैंक्स गरिमा। या वेलकम पंपकिन, बैठो तुम। Oh god. I can't tell if we're supposed to like her or not मेरे हाथ yet. की वेलकम मैगी खाओगी? श्योर क्यों नहीं? ठीक है रुक बनाती हूँ। आपको सब चाहिए। देखो प्रोटोटाइप की फंडिंग नहीं मिल रही तो उसकी फ्रस्ट्रेशन मगू पे थोड़ी निकालेगी। निकल गया ना यार गलती से। Oh. और वो पढ़ते पढ़ते भी तो लड्डू खा सकती थी ना। मतलब सिग्नल के इंटरनल के सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं है। देख थोड़ा क्लोज कंपटीशन है, pretty sure वो तेरी सिस्टम और सिग्नल से ज्यादा वैल्यू करती है यार, चिल। तेरी बड़ी बात हो रही है उससे। बोल रही थी क्या मेरे बारे में कुछ? बोला तो कुछ नहीं बट समझ आ जाता है। और वैसे भी मेरा फीमेल इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है। हाँ बहुत स्ट्रांग है तेरा फीमेल इंट्यूशन, देख लिया। 2 महीने से उस नुक्कड़ को डील कर रही थी। I was gonna say. वेरी गुड, कीप इट अप। स्टार्टअप की फ्रस्ट्रेशन मेरे पे भी निकालेगी। मैं जाऊं क्या? जा निकल। ठीक है बाय। Don't go. Tell her not to go. I know. अच्छा रुक। There you go. Exactly. Stop telling people to leave. सॉरी, ये लड्डू खा के बता कैसे? Oh, yum. God, okay. मैं गुस्सा ना कंट्रोल में रखा There's है। always food in these. नहीं तो लड्डू भी फीके लग रहे हैं। नहीं एक काम कर, तू डब्बा रख और निकल ही जा। करी ना टंकी। क्यों लड़ते रहते हो यार तुम दोनों? 3 Idiots वाले फरहान और राजू जैसे क्यूटी से हो। प्लीज I love the reference. Yeah. इक्वेशन में ना तू कहीं से भी रैंचो नहीं है। अगर हमारा कभी ग्रुप बनता है ना रैंचो, और वैसे भी द प्रॉब्लम इज दैट मेरी सप्ली की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? थैंक्स टू यू राजू तो गए हो। हाँ खुद पढ़ के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। साबू दीदी वो मगू ना कमरा ढूंढते हुए टॉप फ्लोर पे चले गए और सीनियर से उसको छत पे लाके पेल दिया। मगू What? चल जल्दी। I don't. There was I like feel they like showed that this is shot a again. trick. Yeah. वो कहाँ I है? think she just wanted the sweets. चमची हमारे पीछे आ रही थी, वो कहाँ गई?
पता नहीं यार चल वापस चल पापू They showed that shot of the cupboard again. चाची ने हमें कैसे प्रैंक कर दिया यार मैं तेरे को सही बता रही हूँ कियारा मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही यार जी भी आई है तेरे नानिया में dude मेरे लड्डू Yeah, see. चमची को पकड़ It felt very elaborate to just get some sweets. Yeah. Hey, when man, you just be sweet. like, When you want some sweets and you don't feel like paying for it. Hey, can I have a laddu, please? Sure. Do you want the whole thing? Fatty. Oh, revenge. I see. Oh my god. What's this hierarchy? It's like this dog hierarchy thing. Not dog, but it reminds me of Planet of the Apes. When they like Oh bend yeah. down. You have to like She just approve. got slapped. दे वापस Aww. 103 वाली के रूम में नया हेयर स्ट्रेटनर आया है लेके आई तू नहीं सॉरी दीदी मैं लेकर आती हूँ Oh, she's a bully. She like seems like she runs this whole Yeah. store. She's the alpha. Alright, some surf music. Okay. No, I like it. It's like Pulp I love Fiction. in a it. way. Yeah. God, what's gonna go मीना बाबू wrong? लड्डू खाएगा आ करो आ आऊं I love her reactions. मग्गू Chainsaws मैं on her तुम्हारी खा ली shorts. हाँ। तो अब गुड बाय लड्डू भी खा ले गुड बाय What? ये तो साबू की है Yeah. तू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, बोल मग्गू को सीने छत पे फेंका थे तुझे किसने बताया बोल बता किसने बताया The hair straightener. देख ये छोड़ ना बहुत दुखेगा बोल किसने बताया बता दे Oh, that was fun. ये लड्डू तूने कहाँ से खाए कहाँ से खाए बोल ना फिर से करूँगी आई प्रॉमिस ऐसे करूँगी बड़े बड़े ने बोला था They weren't that bad. I don't think. Is it? I mean, I've never. हाँ जी Depends how बोलो tight your bra is. मग्गू को लड्डू के लिए थैंक यू और सिग्नल के इंटरनल के लिए ऑल द बेस्ट बोल दो रहने के लिए कमरा ढूंढ रही थी ना तू एक काम कर इसी में फिट हो जा क्योंकि अब यही खाली बचा है बाय चल निकल I don't understand her character. So, I like, don't understand why she let her in at all then. Yeah. Other than Oh. just to be mean. Playing games. well, I think it's an establishment of power, maybe. Yeah. Like you see Whiplash, where like he's nice to him only to mess with him. Yeah. I'd let you stay in my room, girl. I'm so sorry. तू यहाँ क्या कर रही है ठीक है तू बोला था ना तुझे कोई नहीं पालेगा Oh my god. मेरे लड्डू Girl, no. कुत्ती मग्गू मेरे सारे लड्डू खा गई तू अकेली बैठ के अबे मैं तेरे लड्डू के आगे मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना तूने तो बड़ी वैल्यू की थी ना सिग्नल के सामने मेरे और मेरे लड्डुओं की वो इंटरनल था ये सब लड्डू हैं ये लड्डू मैंने इतने प्यार से तेरे लिए अपने हाथों से बनाए थे कि गरम गरम मैंने गप्पे आपके के पास साथ तेरे बेड कौन बनाता है तेरे कपड़े कौन धोता है वैल्यू तो करती हूँ ना क्या वैल्यू तो करती है नजरों से निकाल दे तेरे बेड के लिए कौन तुम दोनों मेरे ग्राम फैमिली ग्रुप से भी सारा छुपे हो चुपे नहीं हम
Now they turn on. हाँ, ये चुप है लेकिन ऐसे चुप है सिर्फ मैं बुला सकती हूँ तू नहीं. हाँ, नहीं क्यों? और माना ये साबू को बहुत गुस्सा आता है, तू भी बोल देती है, पर इससे अच्छा चीज मैगी पूरे कोई हॉस्टल में नहीं बना सकता, तू भी नहीं. हाँ, ये स्टूपिड है, इरिटेटिंग है, लेकिन बहुत प्यारी है. तो उसके साथ रह के तो देख तू क्या बोल रही है. सुबह उठती है, बिस्तर बनाती है, कपड़े धोती है, GOT के सारे एपिसोड डाउनलोड करके रखती है क्योंकि इंटरनेट की स्पीड उस टाइम सबसे फास्ट होती है. तू क्या बोल रही है? और ये भी मेरे लिए सारे she stands up for me, she gets Okay, so my her fight, character she is saves me from boys. the sound mind ये सब पता है character. तो क्यों लड़ रहे हो चुप हो जैसे यार. Hug? Hug it out, girls. Yay. Oh, they like crushed the Bechdel test in this episode. Yeah. Yes. We didn't even see like a single No. guy this whole Yeah, episode. they mentioned a guy once, but like Sorry, it was यार, very आपको- minute. तू ही तो है. तुझ पे ऐसे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था. सॉरी साबी, मैं भी बेकार में कमरा छोड़ के चली गई. और तू ना रोया मत कर. मुझे पूरा भरोसा है. प्लेसमेंट्स में ना तो जरूर 9 लाख की पैकेज मार लेगी. अरे पागल, तेरे स्टार्टअप में 4.5 लाख में आ जाऊंगी. मेरे क्यूटीज. चलो ना यार, अभी Yeah. बीच बाथरूम में ऐसे सेंटी मत करो. अच्छा दूसरा सॉरी कौन बोलेगा? किस लिए? इसलिए मतलब ये लड्डू तेरी माँ ने खाए थे. अरे वो तो बिच गरिमा ने खाए, चोर साली. तेरे लड्डू ले गई तेरे नाक के नीचे से, तुझे पता भी नहीं चला. सारे खा गई, एक भी नहीं दिया उसने. फिर कमरे से भी निकाल दिया और फिर एंड में कहती बड़े फीके से. फीके तो थे. अच्छा हो गया ना. प्लीज तू मुझे पढ़ा नहीं रही है तो मेरे नोट्स तो बता देना कहाँ है. मैं अरे तो रुक जाना यार, कैसी सी है. उस नुक्कड़ के साथ तेरा ब्रेकअप हुआ तो हमारे पास आई. अब देख इसकी सप्ली आई है तो पढ़ने के लिए भी हमारे पास ही आ रही है. हमें हट चाहिए तो भाग रही है तू डेज की कहीं की. क्यों पर्सनल हो रही है? मैंने तुझे कुछ बोला? अब तुम दोनों क्यों चूपों की तरह लड़ रहे हो? ये बताओ कि गरिमा की कैसे लेनी है. Yeah. अरे व्हाट, मैं थोड़ी बताऊंगी हर बार आइडियाज. क्यों रांचो तो ही बन रही थी. तो क्या ये लड़ियां फोड़ने जैसे यूजलेस आइडियाज देती फिर? एक्चुअली इतना भी यूजलेस आइडिया नहीं था. Again? The firecrackers coming back. Which one was Rancho again? Rancho is isn't that Amir Khan's character? I can't remember. अरे क्या है? गरिमा दी वो वार्डन आपको नीचे बुला रही है. क्यों? क्या हुआ? मैं वो स्ट्रेटनर लेके कॉरिडोर में से आ रही थी ना, तो सीसीटीवी में उन्होंने देख लिया और उनको पता चल गया कि आप सारा सामान चुराते हो. तुम बेवकूफ है. शक्ल मत दिखाइयो अपनी. बाबू आपको पता है क्या हुआ? Dang, she gets all the abuse. Oh, the firecrackers in her room. Awesome! Awesome! This music is so great. This music great is faces. so awesome. Oh, they set her up for the firecrackers. Yeah. The jacket from the CCTV. Uh-huh. Yes. Oh sorry. Oh man. Damn. Oh shit. क्या समझा था? हाँ? सीता मैम स्टूपिड है, कुछ नहीं समझती है. मैम वो देखो ना. Oh shit. तो क्या समझा था? सीता मैम स्टूपिड है, स्टूपिड के साथ साथ फंकी भी Nodding है, in the समझेगी background. नहीं? सीसीटीवी कैमरा में सब दिखता है. सारे सबूत मिल गए हैं मुझे. All the proof. क्या है? सबूत? I said सबूत.
फुबूत 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 सबूत फुबूत मैम ये मैंने नहीं किया मैम Damn. बस 10 दिन से भूल रही सजा तो भरपूर मिलेगी मोटू मोटू आता प्लीज हेल्प मी मोटू प्लीज वार्डन मैम आई एम सॉरी चोर साली। She's been doing this all night. It is सुबह तक जगा morning. के रखा इसने तो Oh, I don't know. And अरे there's अभी no तक तो pajamas. बाथरूम भी नहीं गई होगी, भाग भाग के यही लड्डू निकलेंगे इसके। चलो गुड वन किसने सोचा था हम में से ये रैंचो निकलेगी राजू तो फिर भी तू ही निकली ना यार अब इस पे मत लड़ी हूँ चूपू की तरह तू बन ले फरहान मेरे पास लड़ने का टाइम भी नहीं है पता है डायरेक्टर ने मुझे बुलाया प्रोटोटाइप डिस्कस करने के लिए अरे वाह। अच्छा वैसे रैंचो तू ना जो बड़े तशर में फोटो फाड़ के गया था ना चिपका दिया वापस हाँ चिपका देंगे और मेरी क्यों राजू खुद अपनी फोटो नहीं चिपका सकता बिल्कुल चिपका सकता है। चल लगा दूंगी अरे वैसे अगर 3 इडियट्स लड़कियों में बनी होती तो क्या नाम होता? 3 झल्लियां पर रैंचो तो फिर भी नहीं होती। अब हाँ Aw. Three crazy girls. I love them so much. That was a good follow-up. That was really cute. I was not expecting it to go that direction. Yeah, I mean, it starts off so dramatically. It's like, boom, they're just in the middle of this argument, and oh man, I was getting so uncomfortable. It felt too real. I'm like, oh. I'm like, I've been there, yeah. Yeah. College roommates, I've been there. Yeah, it's intense. Oh. Well, one of the cool things is this is kind of following something I think we're used to from the 90s, which is the next episode didn't really have a whole lot to do with the first episode. It was like another day in the life of, but it still maintained some of the things established from that first episode. Yeah. If that makes any kind of sense. Like with the Yeah. firecrackers. With the coming back firecracker, in. yeah. Yeah. I mean, I guess it's both, right? It's doing the best of both because it is bridging information from the first one, but it is its own kind of whole story. Like, if you didn't watch the first one, you'd still get what was going on here. I think it's self-explanatory. I really like this show. I'm very into it. I'm like, I want more of this to be like widely available. I love seeing these 3 girls, and like what you had said, like we didn't see a guy this entire episode, and it's like not a big deal, but it really is like alarming, like as a woman who watches so much entertainment and divulges so much entertainment, to not even see like a single guy in this was like crazy and awesome. Because guys suck. I'm not saying guys suck. Yeah. They're kind of like setting them up to be, you know, they're going to learn a lot of lessons in this show. I feel like they're going to become better people. We're going to see them support one another, but then have like very real relationships. Yeah. And I think it's really cool. Just for those of you who like have weird knee-jerk reactions to anything Tiff may have just said, I support what you're saying. I think it's awesome because there's no dependency on a guy in order to functionally tell the story effectively. We don't get that very often. Whereas the reverse is true, where you can have a story with a bunch of dudes and there's no women other than maybe a prop. For me, like immediately I think of a movie like Snatch, for instance. Like there's only like one girl in the entire film that I can recall, 1 or 2 chicks, and they're both like props essentially. It's not often that you see this kind of thing happen, especially in the States. I feel like Yeah, like we don't get anything like this here. Yeah. Like I'm like watching this, I'm trying to think of any show that we have that's similar, or a movie. Maybe the new Ocean's 8 yeah, movie. but it's not. It's Yeah, not good, it wasn't. But it's It not wasn't like a fantastic movie. Yeah, there's. Right. I mean, it's like a fun whatever watch. I feel like I'm getting more out of this than a lot of like solely like female-driven content that we're getting in the U.S. The other thing I like is that, I mean, there's profanity in it, but for the most part, it's a very wholesome show. It doesn't resort to toilet humor, at least not yet. It hasn't, and if it does, it's gonna be like a punch that comes later on. You're talking about like things where it's all like a whole female cast. Anytime you do that,
here in the States, it's got to be like the raunchiest Like toilet humor. Bridesmaids. Yeah. Right? Like it's a fun movie and it Yeah. is funny, but it's a specific type of comedy. Yeah. And that really is, I feel like, a driving force in the movie. Where here we just, we're seeing these girls like live in normal life, like normal situations that we would all be in. Yeah. And it's compelling. Exactly. It's Yeah. so relatable. Right. What's great is they're just very likable people. Yes. And relatable. I agree with you. Like what you were saying, Bridesmaids, it's like a very extreme situation. And that kind of humor also doesn't like sit well with me most of the time. It's all the things that we're saying. Like they're interesting, they're compelling to watch, and it's like wholesome. Yeah. They're relatable. And it's about friendship, and I feel like female friendships are such a special thing. Why shouldn't there be more shows or more movies, just more content out there where it's just about the female relationship, as opposed to anytime you think of a story that's kind of made for women, it usually involves a romance, like a rom-com or something. And I'm not or it's through the lens of a guy. Yeah. Yeah. And I don't hate rom-coms. I actually really love rom-coms. I do too. But it's refreshing to see something like this where it's just like, I love my girls, And I don't think that you have to be a girl to like appreciate how good it is and how like entertaining it is and wholesome. It's a really great show that I feel casts a pretty wide net as to who can enjoy it. As women, we'll enjoy it on a different level, maybe because we're seeing more in it than what a guy would see. But I still like it. You like it. That's the thing, is like I don't feel like it's catered to me. Right. But I feel like I'm personally taking a lot out of it. Yeah. Well, but they're not hand feeding it to me. Spoon feeding, yeah. What I like is that it doesn't feel like it's excluding me as a dude. I've seen so many things that are catering to women in the States, and it feels like you can't be part of this. And like, well, okay, well, I'm just not interested then. Like, you're cutting out half the population there of a potential audience. Whereas this, it feels like I'm still included. I can still laugh with them somehow, even though it's a mostly female cast. So 3 Idiots is a film, and it stars Amir Khan as well as a cast of other people. But the 3 people they're referring to is the main characters. Amir Khan plays Rancho, who's a very smart guy. He's kind of a special child in a way. He behaves in such a way that not everyone appreciates, but everyone who knows him knows how smart he is and appreciates his character on that level. And then Farhan, what is his character? His character is basically someone who's got a passion, but he's following this other thing because his dad pushed him in this direction, but he really wants to be a photographer. And then Sharman falls under the pressure of studies and tries to commit suicide, and he comes back eventually, but he becomes like super real by the end of the movie, like no bullshit anymore. Just for reference, I don't know if they're gonna mention them anymore, but it seemed apparent to me from the beginning that there was an influence of 3 Idiots in here. Yeah, also because the warden in it is basically a caricature of the main teacher in the movie as well, and he has a lisp and she's got a lisp. Oh, funny. And I love 3 Idiots. It's one of my favorite Indian films. Yeah. So great movie. I was happy to see the reference. Anyway, I'm really digging the show so far. There's like always an arc in every episode so far. We've only watched 2, but there's always that arc. Like, okay, so we start out with them basically hating each other. But even with that, you can see these little like close-ups where they're like, no, but I don't want this fight to actually happen. Because that's what happens in real life. It's like you're not saying, this is great. Because I was just watching a review that I did a while ago with you for a film where everyone is saying exactly what they're feeling. Yeah. Here, it's the opposite, where they're following the rule of real life, which is people don't say exactly what they're feeling. They say the opposite. And you could see her face like, I don't want this to go this direction, but it is. By the end of the episode, they figured out a way to resolve it. It does feel very like 90s, like, oh, okay, we solved another problem. Yeah, But I still find it endearing. I've certainly had these types of arguments with my sister, and I know it's not the same as best friends, but like my sister is like my best friend, and it's like it's not even a thing about the thing that you're arguing about. It's usually about some random thing that doesn't have anything to do with it, and then suddenly you're blowing up at each other and saying things that you totally regret, and then after like a few hours you're like, I'm sorry, I love you, can we be friends? And a slow motion hug. That's the ending. And maybe a little bit of a cry as well. Oh yeah, I definitely think they would have cried at some point a little bit more if that was me in that situation. I would have been like a mess after. Yeah, be like, I love you, really. Well, I mean, it wasn't over a hug, but she did cry at one point. She was in the bathroom, like, I felt for her. Yeah. Very awkward. Had nowhere to go. Anyway. Looking forward to episode 3. Thank you, Timeliners, for allowing us to react to this. Very, very much appreciated. And you guys, please check out ACHARA KIRK and Tiff Mink. They're sitting beside me, and they're also on the internet. Tiff has her own YouTube stuff. Yeah. You should watch those. So, totally the same kind of content.
Subscribe if you haven't already. Check out our other reactions, reviews, and short films. I am Jaby KOAY. This is ACHARA. and Tiff Mink. peace out.